Greetings, everyone. This is me again. Oh, my voice is kind of. Sorry about that. Uh, Greetings. This is me again, Zara Bazak. I think there is someone who comes. I mean, the reason why this person who comes here and I've been banning him, and he takes that word abusing of what I used for Prophet Muhammad once, being very angry at him. Now he uses it for people here, abusing them, trying to punish me or something. Surah 33, ayat 52, exchanging of wives. So that is, it's there in the Ismaili Quran too, this ayat. But anyways, some of the one thing, I don't like Ali. I hate him and all this because I hate killers like Ali. But the thing is that the prayer, the Ismaili prayer is somehow stopping me from abusing, just, like that here. Uh, Not anyone, but just saying something. So there's perhaps Anand Kiran, the one who came on Desi Chat, did something to me. And yeah, I still hear the voice. Now it's the voice of Anand Kiran because I've spoken to him over the phone some 20 years ago, 23, year 2001 to when he came on Desi Chat. So, and there's hardly anyone who can help me. My previous live stream, it just went to waste. No good coming out of any one of us or anything. We couldn't figure it out. I guess the Indian gurus might have figured it out. Uh, so that's a sarcastic remark for the Indian gurus. And see, we just I can't do anything. No one to help me. Uh, so how to bring out good in people and how to be good people. Unfortunately, as just hate Imam Ali ibn Abu Talib. But this Imam and the help, so I was of humanitarian help. It's really working. What maybe a Hindu did from a distance, parapsychology or something. So I was reminded of parapsychology again. I watched Rupert Sheldrake's, when I was watching his videos, and then something happened to me. I started to go against Rupert Sheldrake. I apologize for that. Like, I don't know what the devil has gotten into me. The same devil may have gotten into Imran Khan. His relationship with MBS, you can watch Haris Sultan's video on that. So I've put a comment there. I don't, never did. I stopped commenting there because there was this Hindu guy who harassed me and I give it to him. So after that, I was like, I'm not going to comment. I didn't know how this works actually, that people have no ethics, nothing. They're even telling, this Hindu didn't even know that I'm an ex Muslim. Now, I had on my that time to save Harris's, like to protest against the one who said threatened Harris to kill him, his family. So a Hindu guy came there and said, "Oh, you want Laundia or something?" His name was Hindu. So I don't think any Hindu or anything can help me here. Yeah, so it's really pathetic to see what's happening to the world. And here also on my live streams, there are just these people who come and really immature stuff going on. Sorry to say this. And
I give them time and all that. But it's really immature. Like this person came saying that you just have to get, into your hobby or professional stuff. He's a table tennis, and maybe he got it from my Facebook account because I see men coming there on my live streams Facebook on Mrs. Munira Kulsar, and there's someone long a few years ago came to tell me he's a table tennis player and he knows Mrs. Munira Kulsar. So just to get my attention here, like Anand Kiran did on principal's birthday. I don't know how he knew, maybe from Holborn, because she was, I put there as my guardian, her address and her name, and maybe her date of birth. So I saw this in London too, in the Indian, like, gossip. And then there was some people coming here, like Afia and others, telling me that there's some man was seen and you be saying bad things about me, Chukli. And it doesn't make a difference to me at all. Let them say bad. There are people saying bad things about His Highness Khan, right? And others. Doesn't make a difference to me in that. So I'm coming to a little bit. There's something wrong with me. I don't know who's done this. People are not going to believe that, whether they believe it or not. I'll try to prove something here about what the devil is wrong with me. तो ना ये सोसाइटी देखा, हमने देखा कि ना ये इंडियन सोसाइटी, इंडियन पीपल सुधरेंगे ना पाकिस्तानी. क्या है मकसद? अगर अच्छा है आप लोगों का, आपकी नीयत साफ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया. 4 घंटे लगे थे और doesn't matter. If we can help someone, render help to someone. लेकिन ये है कि इधर वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रू द ट्रू नेम, ट्रू आइडेंटिटी. पता नहीं कोई, मुझे तो लगता है अभी ये एक एक तो एम्पावरिंग फैमिली ने मुझे नहीं कहा किसने मारा है 45 खानिस को. और पाकिस्तान में मुझे अभी थोड़ा किसी फॉरेन एजेंसी पे शक होने लगा. हालांकि फ्लायर्स ऐसे देते हैं कि वी आर फ्रॉम द दाइश और आईएसआई और तालिबान. लेकिन मुझे नहीं लगता तालिबान ऐसी चीज़ें करेंगे कि एक. सो आई वाज praising the Ismailis a lot on Facebook. एक मिनट, sorry, a minute, mute myself. मुझे कुछ there was a man I met खड्डा मार्केट में मैं थी कराची में. I met a young man. We were talking about this कि ये कैसे स्टॉप करें ये जो पाकिस्तान में हो रहा है टेररिस्ट अटैक्स, मुसलमान मर रहे हैं, ये कैसे स्टॉप करें. और ये क्या मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं जैसे सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट शिया को मार रहे हैं. So there was a man there from Hyderabad, Karachi, a young man. He told me, he was very respectful towards me. He said, I beg to differ. जब मैं पाकिस्तानी मुसलमानों को कहती क्या कि कौन है, आर द मुस्लिम्स, तो मुझे कहा कि आई बेग टू डिफर. शॉप के अंदर मिला था, बट ही स्टार्टेड टू टॉक टू मी. ही सेड ही बेग्स टू डिफर बिकॉज वो जो मिले थे पता नहीं कौन से बॉम्ब ब्लास्ट में, वो सर्कमसाइज नहीं थे. I said, what? So there were some people after, like, they go for the suicide and all this. There were some of them who they found the bodies of, who were suicide bombers, but they found the bodies, and Pakistan found their bodies. All right, army, yeah, they were not circumcised. And he had a connection. This young man,
Pakistani man had a connection, inside connection. He told me, he said they were not circumcised. तो मैंने कहा ओह, उस पर मैं चुप हो गई. तो ये जो 45 आगा खान है, इसको हो सकता है कि ये फ्लायर्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तालिबान से हैं या क्या, बट दे फॉरेन, दे नॉन मुस्लिम्स जो ये सेक्रेटेरियन वॉर्स और ये मारना करना करवाना और कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं और कब से कर रहे हैं. सो ये भी हो सकता है. अभी आनंद किरण जैसे इनसाइड में उसका थोड़ा हैवी वॉइस है. ओह माय गुडनेस. तो शायद हिंदुओं में भी थोड़ी जेलसी है ना कि दूसरे आगे नहीं बढ़े. जैसे हमारे 50-50 ड्रामा में पाकिस्तान में जब मैं रह रही थी, तो वो क्रैब का बोला था ना कि एक वो कैंस, वो क्या पकेट में क्रैब्स ऑल फॉरेन, अमेरिका से आए थे, यूरोप से क्रैब्स फ्रॉम और सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी क्रैब के बकेट के ऊपर लिड नहीं था, लिड नहीं था. क्यों नहीं था? इसलिए कि वो दूसरे क्रैब्स जो भी ऊपर जाना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, वो दूसरे क्रैब्स उनको पकड़ के नीचे लाते हैं टू गो फर्स्ट, अप. तो ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियंस का भी प्रॉब्लम है. इंडिया में भी ऐसे 2 बकेट्स जिसमें लिड नहीं था. तो ये है, ओ बड़ी मुश्किल है. तो like I have these panic attacks and all, I can't help it a lot. So it really hurts me to see that the Indians are not that helpful. और पता नहीं गुरु कैसे बन गए हैं. So actually, spread. We wanted love to be spread around the world. अभी हमारे, although I don't, I think that I don't know. I have some um, criticism against the, this Ismaili Shia, but I love the Imam, absolutely adorable है. लेकिन एक बात पे मुझे अब गुस्सा आने लगा है कि why is he lying? और फिर वो of course he has to कि अगर वो कुछ कहेगा कि खैर कह तो दिया है विकिपीडिया में, which is quite dangerous for him. But at this time I see on Wikipedia that he said, oh no, Karen Armstrong has written, not he. He hasn't said anything. So it's a citation from Karen Armstrong's book, which I had bought, and it's back in my residence city. I don't know, maybe given away by my father because they can't bring cargo, all the books I had bought here. तो उन्होंने कार्गो नहीं किया और मैं जल्दबाजी में had to leave. So Agha Khan, Ismailis का ह्यूमैनिटेरियन वर्क है और वो कब से है इस्माइल. और मुझे अभी थोड़ा शक होने लगा रिसेंटली किसी और पे. इस्माइलीस को जिसने 45 इस्माइलीस को जिन लोगों ने बस I could get into trouble, a lot of trouble, okay. इस्माइली ये हिंदू, वैसे भी इसने आनंद किरण ने पहले आया था. He's done something to me from a distance. मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपना और कबारा लाइक कचुम्बर निकालूं मैं. वॉचिंग फीलिंग और बहुत ज़्यादा. And they were saying बीबी फातिमा Zahra. Please, is there someone who can help me in this? What the devil is wrong with me?
तो ये नहीं चाह रहे, दुश्मन नहीं चाह रहे. Sorry, but I feel that the enemy, there's someone very treacherous, doesn't want Pakistan to progress, doesn't want. देखिए इमरान खान का एटीट्यूड, लाइक जो हारिस सुल्तान ने खुद कहा है, so from that otherwise I wouldn't be bringing this out. तो वो दोस्त है, और वो जैसे मैंने भी शिप देखी, बहुत बड़ी, हिज हाइनेस शेख फात हर हाइनेस, वो अबू धाबी की शेख है, तो हर हाइनेस का बेटा है, शेख फातिमा बिन्त मुबारक अल केबी. तो कहा ये शिप आ रही है और पता नहीं क्या जा रही है, इधर पहुंची है, शेख की शिप है, ट्रिपल बहुत इसमें. तो देखिए अगर एनपीएस जैसे इमरान खान को कुछ कि क्यों इतना ज़ाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनको ना अपने फ्रेंड को फ़ोन करना चाहिए था, एमबीएस को, राइट. ऐसे पीछे नहीं बात करना चाहिए था, जो मदद कर रहा है. अब मैं भी आके ऐसे बोलूं कि ये क्या शेख कर रहे हैं, उनके पीछे बात करूं, चुगली को खाऊं. That's not, that's terribly low. I mean, for me, am I exaggerating? नहीं, दोस्त आपका दोस्त है, आप उसे फ़ोन करके बोलें तो वो शायद अप्रिशिएट करेगा. लेकिन आप किसी और को उधर बोल रहे हैं, उनका प्लेन लेके, यू नो आप उनको फ़ोन करके बोले, आपका दोस्त है, कि ये क्या, ये ये क्या बात है कि इधर वेस्ट इतना, यू नो इसराफ हो रहा है और लोग मर रहे हैं. आपकी एयरप्लेन में देखें क्या बाथरूम है, ये फ़ोन करके बोले. इमरान खान को कुछ हो गया है, ये इमरान खान नहीं है. जैसे मुझे भी कुछ कर दिया ना इन्होंने, मैं नहीं हूँ. आई नो दिस. कोई अंदर मेरे हैवीनेस हो जाती है, अभी मुझे इतनी चीजें करनी है, गार्बेज, कुछ नहीं कर सकती, इधर आ गई. सो इस्माइली, थैंक यू. मैं इनको शायद गालियां भी दूंगी अभी, हो सकता है, लेकिन एक गाली मेरी स्टॉप कर दी. या अली, तो ये जो दुआ दी है, अभी 7 days नहीं हुए, इट्स नॉट बिन कंप्लीटेड. ठीक है, मैं गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा है, क्या करें एक और. आई डोंट हैव रूम फॉर द गार्बेज टू. स्माइली ह्यूमैनिटेरियन वर्क, माफ करना अगर, लाइक मुझे बहुत गुस्सा है, लाइक जो फोकस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, खुदा इनको सलामत रखे. आई रियली लव दिस हिज हाइनेस आगा खान एज अ पर्सन. अब इमाम, तो oh, look at this, right? I'll just show you. No copyrights infringement intended, बेचारों का 54, 45. Empowering family notes. तो ये मैं आपको दिखाऊँ, हाँ, तो थैंक गॉड. लाइक देखे ना, अगर आप कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भी पागल कर सकते थे ये इंडियन, इनके पास अगर ऐसा जादू है, मेरा फादर तो कहेगा सिर्फ तुम्हें क्यों, तुम क्या प्रेसिडेंट हो ऑफ पाकिस्तान. हाँ, ये मुझे नहीं पता क्यों, मुझे क्यों. तो दाऊद इब्राहिम has remained safe. Honey, मुझे, why me? And so I went to sleep very lethargic. But yeah, and they try to, there's an obstruction also for this prayer. तो बहुत इतना छोटा, it's such a small prayer. And I remember because I used to say the whole Nade Alis. It's Ali, and it's in my language, like my mother's language. I should have no problem with this. I should have had problem with Hindu mantras.
which could be repeated so easily in me that I cannot tell you. But this prayer, there's obstruction. I have to lie down. I have to really concentrate. या तो मैं कह रही हूँ या अली फजल करो और उल्टा कह रही हूँ एंड या अली रहम तू रहम कर या मौला तू फजल कर नहीं होता है आसानी से नहीं हो रहा है it's not so God what is this going on with me obstruction हो रहा है जैसे कोई अंदर है और अभी मुझे आनंद किरण की आवाज आई I've spoken to him although he's in Hyderabad worldly I've known his voice वो जो देसी चैट पे आया था और दीदी यू नो द रिवर और ये वो my birth date अपनी ना birthday अपनी दिया and I want to be a friend I want a friend and दीदी can you be my friend and this and that अच्छा एक दफा मुझे उस पे भी इतना गुस्सा है मैंने कहा खुदा तुम्हारे हाथ चला दे ये वो ना दैट्स व्हाई अब 2-3 साल उसके साथ और वो देसी चैट पे मुझे किक आउट कर रहे थे और अंदर लीग सिद्दीकी के साथ ये थे प्रेजुडिस बायस तो मैं थोड़ा मिसबिहेव कर रही थी देसी चैट पे तो ये किक आउट कर रहा था ये मॉडरेटर्स बने थे और मुझे फिर ना जो गुस्सा जो जेलसी इनसिक्योरिटी इन्होंने ऐसा मुझे इनसिक्योरिटी दी थी करवा दी ना अब यू ब्रेक समवन ये आनंद किरण और ये अंदरलीप से देखी दुश्मन पता नहीं कहाँ से आए क्यों मेरे दुश्मन बने हो so this is I don't want to go back to a religion but thank you so much अब मैं कैसे बैलेंस करूं because I really need help तो मुझे बहुत लाइक जहर पी के मुझे अली का नाम देना पड़ता है तो लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन है तो मुझे आई एम ऑन वन साइड मच मच ग्रेटफुल देखिए क्या but help empowering the most vulnerable I can trust this because आग खान नर्सिंग स्कूल में मेरी टीचर उधर काम करने लगी थी मिस डिसा मिस एस्टेरिया डिसा एस्टेरिया when you need Eileen. So, so Miss Asteria Disa Asteria, isn't your name Asteria? So it's a beautiful what His Highness Aga Khan made, empowering the most vulnerable. एक ही DN को मैं trust कर सकती हूँ with closed eyes. This I know, but I don't want to go in this religion. Your Highness, the लेकिन बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि मुझे इनके रिलीजन इन्होंने अपनी दुआ दे दी और पूरे ग्लोबल के लिए दी है सो आई डोंट हैव टू बिलीव बट व्हाट इज दिस देन आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक बेचारों ने अभी दुआ दे दी सो ऑन वन हैंड आई रियली अगर अगर मुझे एम्पावरिंग फैमिली कहता कि दुआ ये है या इमाम यानी कि ये इमाम मेरी मत नॉट या अली तो मैं खुशी खुशी से कर लेती बिकॉज आई नो दिस इमाम his hands are not bloodied no way near it तो ये इमाम बहुत बेचारे इतने अच्छे मिस्कीन मजलूम बहुत अच्छे हैं और हमें भी ये आगा खानी थिंग था किस बात पे कि अगर सुन्नी पाकिस्तान में आपको जो भी मुंह पे भी आके कहते ना मैं आगे से कुछ नहीं कहती थी
तुम लोग क्या, व्हाट आर यू डूइंग? अगर मुझे सुनी, मैं डिबेट में नहीं पढ़ती थी, मैं चुप हो रही कि डिग्निफाइड मैनर में वॉक अवे। अब देखिए, वो मेरी फ्रेंड भी आती थी, एक एक्स फ्रेंड, बहुत सुनाती थी। पहले पहल ये करती थी, आखिर भी ये करती थी, और चुप भी ये हो जाती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। आई यूज्ड टू जस्ट लिसन, let's see, and then read the Quran and see, oh yeah, yes. उसे सामने मैं कुछ नहीं कहती थी, बिकॉज वी यू नो आर अल्लामा रशीद तुराबी जैसे तो हम नहीं है, लेकिन इनके इनके ये बच्चे बच्चे क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं अगेंस्ट शियाज। तो ये मुसीबत है, खैर जो भी है, लेकिन आई यूज्ड टू कीप क्वाइट। तो ये आगा खानी, हिज हाइनेस आगा खान ने सेड कि अगर आपको कोई गाली भी दे अ, तो आगे से कुछ नहीं बोलना। इट्स वेरी वाइज, इट्स द बेस्ट कंसोलेशन, यू नो। देखिए हजरत, ओ इमाम अली ने, चलें ये एक पता नहीं कहाँ से इमाम अली ने लाया है, इट इज बेटर टू टेक इंजरी देन टू इंजर अदर्स, राइट? लेकिन कुरान की आयतें तो बिल्कुल, आई मीन मुझे ऐसी सी, sorry to say this, तो I was desperate. I could have become an Ismaili right now, जो मेरी मदद करेगा, जैसे क्रिश्चियंस करते थे मिशनरी में, वो मुसलमान क्रिश्चियंस हो जाते थे। इंडो इंडिया के टाइम पे मिशनरीज बहुत थे ना क्रिश्चियंस, पर आई कैंट। तो इन्होंने मुझे ये भी फ्रीडम दिया है, बिकॉज यू नो व्हाई, पता नहीं क्यों, बहुत जनरस है। लेकिन बस एक जहर पीना पड़ता है, कहने या अली, फोकस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इस्माइलीज। और ये बहुत पुराना है। Agha Khan was an imam at the age of, empowering family said, if I can remember, 20 years old. तो ये बहुत अच्छा है। और वो सिक्स भी, I was thinking, if some Hindu is going to harm me and do all this smart things, over smart, being over smart here, and lie to me, I will do something. Okay, so this, I can take the prayers of सिख ने, पता है मुझे लंदन में हेल्प किया था, मुझे बहन, मैंने उसे भाई बनाया, and he gave me his kara. So he was in Holborn College and my hostel. He gave me his kara. सिख तो ऐसे हैं कि वो स्मोकिंग रूम में बैठा था ना, मुझे कहा, I just told him that you looked a bit like my brother. Sorry, I'm staring at you, I'm looking at you time and again. I apologize for that because you look like my brother. You look like my middle brother, right? A little bit like me. And then he was like, you're alone here. Ab London mein, I am so at ease in my hostel smoking room. Acha keh raha hai ki I'm not going up to sleep because I'm giving you company until you go up. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, really it's इतने वो बहुत गार्ड वार्ड करते हैं। और अभी ये फहद जी आए थे ब्रदर, इन्होंने कोई सिख का नाम दिया था, भूल गई हूँ, कुछ सिंह था। इवन द यूएई इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिम, पता नहीं क्यों। थाईलैंड का डॉन है कहते हैं। तो मुझे सिंह है, फिर BR QR क्या सिंह है, तो ये भी है। So I could have used the other, seeing that इनको पता नहीं क्या हो गया है। I don't find, sorry to say this, what do you call it?
in Hindus. Um, right. I'm just seeing now they are. अच्छा, I'm just trying to fix something here. तो कैसे हम जब थोड़ा सा आराम नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है इस प्रेयर के साथ. Can't even talk properly, you see. This is the problem that they've given. तो ये आनंद किरण कौन था? Who's the Don who's helping the UAE? पता नहीं कौन है, नाम नहीं आ रहा है इधर. PR, what was it? Singh. Oh, तो मैं तो फिर सिक्स का वो लेती मंत्रा. No, wait a minute. Who ca- इमरान खान को क्या हो गया है? कौन सा कीड़ा पड़ गया है? So you know the movie Spellbound? Now that is even for you atheists, I think. Alfred Hitchcock's. This is no pseudo voodoo, but it happens in guilt. So the movie Spell. अगर आप demons और इस पे believe नहीं करते हैं, don't believe in it, but at least believe in this. I mean, at least see this movie, right? Some he thinks he's the murderer. इसको क्या हो गया है? Ingrid Bergman, Gregory Peck. It's about psychology. It's on psychology. Psychoanalyst at a mental hospital. इसको क्या हो गया है? They call it the guilt. तो मुझे वैसे मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि कोई अंदर है मेरे प्रिंसिपल. I want to get over the principle, you know, it's not good. It hurts me through and through. और फिर वो मुझे बुलाती है, आवाज़ उनकी मेरे थ्रू आ रही है. So if anyone says get over her, like it's I'm helpless here. It's like so wicked of people. This is so wicked for me, and it's unspeakable wickedness. Then Hindu कब सुधरेंगे really? Is it the Hindus doing this? Hindus कब सुधरेंगे? I mean, no. Is it the Hindus doing this? पता नहीं है. और YouTube पे if I ये तो मुसीबत है. I wish I could do this on Facebook. If I had this kind of a thing on Facebook, instead of here, you don't know who's coming, कोई क्या यूज कर रहा है. माफ करना, मैं वो इनोसेंट अच्छे हिंदूज के बारे में नहीं कह रही हूँ. So I really want human welfare कि हम साथ कुछ कर सके. और the you see the advice that Gogo gave last night is it's only for the individuals, but we need someone. We need like humanitarian. Okay, ये नहीं कि अपने profession में और start doing some hobby, playing games, or I can't do that. So I don't think Gogo's advice was a very good one for me. You see what I mean? It's not helpful. Gurus जा रहे हैं और spread love, waves of love, और ये और वो क्या है, right? That's अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे और बस मैं अपने प्रोफेशन में, मैं तो काम मुझे ऐसा ट्रिपल कर दिया है, हैवी कर दिया है. At times I become so heavy. और फिर कह रहे कंप्यूटर छोड़ दो, लीव कंप्यूटर. फिर पता नहीं क्या, ये सिर्फ अपने आप को मी जो बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा और वो कहाँ हमें पहुंचाए हैं. Their thing is not, their profession is not going to help us.
हमें मुझे हेल्प चाहिए, जो हेल्प चाहिए वो उसको तो वो मैं इतनी उसको पोलाइटनेस में समझने के लिए मैं खुद it's not that deep help which I need. Just I need a Mother Teresa. क्या आप उसे किसी को वो एडवाइस कर रहे हैं अभी समझ रहे हैं कि एडवाइस वो सुनेगी आपकी oh my god this guy बैठो और ये खेलो और फिजिकल हो जाओ इधर बाहर जाओ और वॉक करो और ये करो ये क्या है you people are you in your I mean I've lost my mind but now I'm really wondering if you people are in your I don't know senses or not यहाँ तो बस सब every each one for themselves लेकिन ओके ईच वन फॉर देमसेल्व्स बट मैं काम नहीं कर सकूं मैं अपना काम इधर नहीं कर सक रही हूँ ये क्या एडवाइसेस दे रहे हैं ऐसे सुपरफिशियली मुझे कितने भेद like they don't understand at all क्या बोलेंगे हमें और वेट अ मिनट ये जो मुझे कोई मुसलमान आता है बार बार उस दूसरों को गालियां दे रहा है मुझे गाली दे इधर बिकॉज आई कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद दैट डी दल्ला I called him don't punish those who come here क्रिश्चियन को गाली दे रहा है पीटर टू अपॉलजेटिक्स को मैंने बैन कर दिया उसको भी बैन कर दिया जिसने गाली दिया because he called me a liar Peter to apologetics this time मुझे दो because if you want to punish someone here you're punishing me नहीं मैं इस प्रॉफिट मोहम्मद को वापस चाहे आप मुझे ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमी में डालें मैंने इस प्रॉफिट मोहम्मद को दल्ला कहा मैंने कहा है आए मुझे दल्ला कहें और आप मुझे दल्ला कह सकते हैं या किसी को ये कौन सा मुसलमान है जो दूसरे को क्रिश्चियन को कह रहा है ये देखें no, it is not lawful let's share this अभी इस पे आ रहे हैं बार बार में seems like I can't keep on my topic here Imran Khan I feel the पहले से ही I felt that sorry you Indians why are you after Imran Khan he's an honest person you should be praying that he's ठीक है मदीना में नहीं चाहिए लेकिन where's it spellbound as a but there's a way इमरान खान के पीछे पड़ा है वो एक एक्स वो जो उनके साथ आया था इंटरव्यू एक पाकिस्तानी लेडी उनका भी नाम मैं भूल गई हूँ क्या था okay we realize you Indians are very refined and all this as if we were not or seasoned आप इमरान खान के पीछे क्यों पड़ रहे हैं और उनका बुरा केस इन्होंने ये बाजवा जनरल बाजवा को फोन करके बोला और ये निकाला और पहले देखें कि आपके इंडियन कुछ इनको छू मंतर तो नहीं कर दिया है एंड ही फेल फॉर गॉड सेक्स नो कहते हैं जिसको चोट होती है आमीन क्लिनिक अमेरिकन वो देखें उनके वीडियोस देखें मे बी उनको चोट लगी है आई होप आई प्रे दैट इमरान खान को ब्लेसिंग मिलती है क्या दुआ करें और इनकी दोस्ती वापस होती है एमबीएस और इमरान खान की मुझे तो इतनी खुशी हुई थी जब एमबीएस ने इमरान खान दोस्ती अब तो मुझे इतना अफसोस हुआ मेरा दिल हारिस सुल्तान ने हमें oh God, it's terrible. I hope नादान एमबीएस रियलाइज करे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के there's something wrong with my friend here
हाँ, अभी वो हिंदूज को बुला रहे हैं और ये ना वो तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट ये इतने अच्छे दोस्त थे, ये इमरान खान को क्या, व्हाट द डेविल हैज गॉटन इनटू हिम। मुझे लगता है दुश्मन नहीं चाह रहे हैं, दुश्मन नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, इमरान खान, मैंने बहुत सारे सार्कास्टिक रिमार्क्स और ये वो सुने हैं इंडियन चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे अगेंस्ट इमरान खान, ओ ही इज डूइंग दिस एंड लाफिंग एट हिम, मजाक, ये इमरान खान ने ये क्या, ये लाइक ये बच्चा है इसको नहीं आना। ही वाज सच अ लेवल हेडेड person. Personal life, forget that. He was honest. Leave the past to but I look at the good of him, the good side. जब इंटरव्यू दे रहा था एक पाकिस्तान में मैं थी, he was really like he had his head on his shoulders. Honest man है. God. और इंडियंस ये क्या जिना जिना के अगेंस्ट, जिना was an Ismaili. He was a he was a brain. Allama Iqbal had to call him from UK, where he was doing his bar. He had done his bar and then stayed there. Okay, come, we need you to fight for a two-state theory thing, a dream, vision. Oh, तो वो तो नहीं आना चाह रहा था, वो इस्माइली था, बहुत फ्री थिंकर था, और आई थिंक एट दैट टाइम इवन. So there's terrible going on. So how can we bring good in people to make you realize yourself that you are a human being? और शादी का है ना, तो ठीक है आपने प्रोफेशन निकाला है, हमारा तो आई एम अ वुमन, आई हैव माय आई कांट गो फॉर ओनली, ऐसे भी कर दिया है कि आई कांट डू मच, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कब शावर लेंगे कब क्या करेंगे. You see these things, they're very important to keep clean and all this. ये भी इसके लिए भी नहीं रखा है, मुझे रखा है. So, oh God. So, शादी ने कहा है, शादी अगर हर कोई कहेगा कि वो भी आप बिजी, यू नो, प्रोफेशनल, ये क्या कर रही है, टॉकिंग लाइक ओल्ड वुमन हियर. Oh my God. Get into your hobby, practice, 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 and this and that. What nonsense is this? देख मुझे इतना गुस्सा आता है. ये जो गोगो कह रहा था लास्ट नाइट, अब इसके पीछे में अभी ये आएगा ना, तो what nonsense is this? Like a principal की तरह कि oh God, I forget when I come here and मेरा, you see my 50, I was 15 and a half years old. मेरी माँ भी बहुत लविंग थी, और हम लोग वो नहीं है. प्रिंसिपल की मदर मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रांग लेडी. मेरी माँ दिल की वो स्ट्रांग नहीं थी इतनी, इसलिए आई थिंक के वो देखना चाहिए. 13 years एज में शादी किया, पता नहीं प्रिंसिपल की माँ ने किस एज में शादी किया, फिर उनका हस्बैंड कैसा था, फिर उनकी मदर, ओ सॉरी, उनकी माँ की मदर इन लॉ कैसी थी, उनकी नानी कैसी, दादी कैसी थी. All this we have to take into consideration, the past. Oh my God. Help us. वो एक फ्रेंड है मेरी, और वो क्रिश्चियन फ्रेंड भी है, उनकी माँ भी बहुत स्ट्रांग है. तो ये लोग ब्रेक नहीं करते तो हम क्या करें. मैं तो ब्रेक हो गई. आई कुड नॉट सी पीपल
suffering like this and just concentrate on my profession and go practice and ting 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 ping 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 ping. What nonsense is this? Selfishness. Saudi. और फिर शिया को बीबी जैनब का एग्जाम्पल देगा या वो फ्रेंड कह रही थी कि व्हाई डोंट यू बी लाइक बेनजीर भुट्टो so yeah, I mean I was a PPP and yet I can't be like बेनजीर भुट्टो अगर मेरे बाप को कोई ऐसे मारे और जेल में रखे मैं तो मर जाऊं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ पॉलिटिशियन प्लीज कुछ लोग उठ नहीं सकते मदर टेरेसा said their spirits have been crushed. So please don't compare me with Benazir and this. Before my father used to compare my mother, tell her to be like Ruqayya Babi. Then what happened to Abbas Gokul? He used to say, behind every man is success. Behind every successful man is a woman. रुकैया भाभी को देखो लंदन में कहता था मेरी माँ को तो आप लोग तो मेरे बाप जैसे हैं प्रैक्टिकल रियलिस्ट जो इमोशनली वेकेंट हैं आप लोग कभी किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे ना हो सकेंगे ना समझ सकेंगे तो फिर नहीं आया हाँ प्लीज ठीक है बिकॉज आई फाउंड माई फादर लाइक एक झंझट सी अंदर दिल में होती है could not tell him things of course we never the daughters cannot speak to the father emotional that's for us to go to our mothers or our aunts माँ से शर्म आती है तो aunt के पास जाओ we had good aunts my yeah one aunt was very close to me not all of them but few two of them. So we can talk to our aunts and aunts, Saudi. So human. What is a human being? तो सबके सबके डिफरेंट होते हैं आप प्लीज कंपेयर नहीं करें कि मेरे जैसा करें जैसे मैं करता हूँ वैसे करें आई एडवाइस यू टू बी लाइक दिस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मेंबर्स ऑफ अ होल अभी हाउ कैन यू आई एम ट्रॉमेटाइज्ड हियर हाउ कैन यू एडवाइस मी मद्देनजर रखें कंसिडर द पर्सन्स थिंग ये ऐसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली लीव द प्रिंसिपल गो फॉर अ वॉक मुझसे बराबर मुंह नहीं धोया जाता है गो फॉर अ वॉक चाय नहीं बनाई जाती है गो फॉर अ वॉक हाँ इसमें ही बस जिंदगी सेल्फिशनेस फाइंड अ हॉबी तो मैंने कहा कि मैं आई एम डूइंग दिस तो नहीं कंप्यूटर छोड़ दो और फिर कह रहा है नहीं मैं ऑनलाइन ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेल मी व्हाट यू मीन जो स्टेज पे भी आते हैं वो भी सही नहीं है मुझे सही नहीं मिल रहे हैं ये कैसे लोग हैं आप लोग ने इधर क्या मजाक समझा है शर्म नहीं आती आप लोगों को मदर टेरेसा के डस्ट भी नहीं है आप अंदर फीट ये करो वो करो एडवाइस एडवाइस पे के नाम पे मजाक मस्तियां करने आए हैं क्या इधर या अपना भरा चढ़ा के आई मेड इट आई गिव यू माई सक्सेसफुल स्टोरी बहुत सुना गुरुओं को भी देखा है बंद करो ये बकवास अपनी trying to put yourself up and me down एक तो ऐसे लोगों के साथ मुझे ऐसा चिढ़ लगती है oh darling honey I made it I just
You know, the DJ and this and that and contribution and um, be financially independent. I want to do this. Wannabes. Stupid nonsense. मेरी ग्रैंड आंट होती थी कभी ऐसा नहीं बोला कि जो अल्लाह को we don't go around saying I want to contribute, inspire you, give you prep talks in CAS. Honey, do this, do that. Oh yeah, I'm thrilled that you're working for the thrilled guy you wannabes. और एक वो sorry to say that principal Mrs. Munira Gulzar कि जैसे यहाँ तो मैडम्स की जैसे आप अब उसकी लाइफ में वो उसकी माँ कहाँ क्या स्ट्रांग थी क्या थी उसका फादर क्या था उसकी हिस्ट्री क्या थी एक दिन भी मेरे घर नहीं आई such a selfish lady. Miss Tessa from 1978 79 she used to come to my house whenever I invited her Christians. इस चीज में तो मुझे रोना आता था मिस टिसा के लिए कि क्या थी मेरे घर आती थी पूरी मेरी फैमिली इमाम बारगाह लेडीज मजलिस अपनी कजन को I've seen her cousin I've seen her sister in London हम ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे और वो फैमिली फ्रेंड मैंने ऐसा क्या किया है उसके ऊपर जंप किया क्या मैंने तो मैं बस आई वाज ओके वाइल्ड इन लविंग हर तो वो समझे हमारे कल्चर में तो ये है कि हम तो टीचर्स वीचर से अटैच हो जाते हैं बचपन से मैं अटैच हो गई थी आंटी ले ले बेगम किसको टीचर मेरी मिस मासूमा बाहर आएगी पान अंदर लेके जाएगी एक शी विल हाइड इट फ्रॉम द इरानियन प्रिंसिपल राइट बेचारी मिस मासूमा प्रिंसिपल से हमारी आंटी लेली बेगम से हाइड करती थी पान जरूर अंदर जाएगा जहरा का नाउ सिंस मिस मासूमा हैज बीन कमिंग आउट डैडी अम्मा कार में हैं हम लोग मिस मासूमा को बुलाओ बाहर then the poor teacher will come out फिर वो जहरा को लेके जाएगी अंदर that became a ritual every morning now for my school बेचारी Allah so, oh God so I've learned maybe spoiled like this नहीं मिस मासूमा बाहर आए फिर मैं स्कूल में जाऊंगी I wouldn't leave the car with the bichari, my teacher, Miss Masuma. She herself was catchy. तो हम लोग क्या करें बचपन में ऐसे स्पॉइल्ड हो गए थे आई रिग्रेट but we get attached to our teachers and then when I left we left for London no St. Vianney's then but she was always there like I could go to her place and have go for tuitions also she lived near us now the thing is that look what the devil is wrong with me so please understand understanding hearts where are the understanding hearts where's Mother Teresa I miss Mother Teresa but I don't want to be a Christian human beings are members there was a time in Karachi I said oh Jesus Christ if I found contradictions I couldn't be a Christian फिर भी मैं वो Saint Anthony prayer I and to become Mother Teresa I called Christ in Pakistan called him please help me I felt so guilty डॉक्टर फौ जो हमें तो इधर हम मजलिस में नहीं जा सकते थे एक रात इमाम रजा को मैं इमाम रजा हेडेक हो रहा है अब oh my god I will get this green daga from Imam this green color here but that's not the point
जुलूस निकल जाएगा, जुलूस. I want to see the julus of Imam Raza, but I couldn't go. Or shocked. जैसे मैं empowering family को अभी भी कह रही थी कि I didn't want to, Imam, I didn't want to abuse. Imam, help me. Now it's Imam. तो ऐसे करके पता है a lot of Christians, एक हमारी टीचर थी उधर, मुझे तो हेडेक्स होते थे, ऐसे खराब होने लगे थे सेंट जोसेफ्स कॉलेज फर्स्ट ईयर के. मैंने तौबा की कि नाउ आई विल नॉट बी फास्टिंग, बट फास्टिंग तो करनी थी. The nights, what is happening to me? Oh my God. It was such terrible, intense migraines. Or what is this? And every time I had a headache, I don't think it was empty stomach. Maybe it's the soup we have. Maybe it's after the soup, the tea I have. What's this wrong with me? Okay, I can't. God, please forgive me. I can't. I won't be. Or मुझे तो इतना मज़ा आता था fasting करने में. रमज़ान की nights I used to enjoy this time without missing the Mr. Sa. Just sit with my songs and all this on. Uh, but headaches. So one teacher of mine in St. Joseph's College told me 40 days Lent they had. Christians can drink water, have fruits. Only one day of the week they can have meat or something like this, right? What teacher? I was like, 40 days, kuch, not even a drop of water. I was like, what? और एक उनको कुछ हुआ था हाथ में कुछ निकला था. She was a saint or something in her. Miss Mary Caleb. She was a Christian, but not from the Miss Dessa side, Catholic Christian. She told me which church she goes to. I mean, I was like, should I go to that church to become a good person? And मैं तो इधर. So it had already happened to me that the headaches were terrible, terrible, excruciating. मेरी existence में तौबा करती थी कि मैं क्यों इधर आई. They were so terrible. If there's any deep, deep pain, like इस pain का कोई हद नहीं है. There's no limit. There's no limit to this pain, you know? The deep pain they take me into, oh, it's so bad. It's like, oh, मर जाते तो अच्छा होता. If I died, it would have been better. So Miss Mary Caleb, fasting, she was like, Lent, you are allowed to drink water. You're allowed to have fruits on some days of the week. You can even have meat, fish, this, that. 40 days of Lent, nothing. Not a drop of water, she told me. And she had something on her hand and that was gone miraculously. She didn't go to a doctor. तो ये बातें तो Christian, like, and I'm like, oh, this love of us, मैं भी एक फूल हूँ या क्या हूँ. It's going to take us, people, bless this, bless Karachi, Ya Allah. Ooh, sitare. Ooh, they're moving. And, ooh, God has given me a miracle tonight. Oh, thank you, God, you're talking to me. Every breath of the way we feel you, Mrs. Munira Gulzar and her family, and me and my family. May the whole of Karachi be blessed in this. So what a shock I got later on. Failure. Brush up on your manners, Zahra. Discipline yourself. Don't ask anything from Mrs. Munira Gulzar. She's your principal, first and foremost.
And the greatest consolation is you did not hurt the other person. तो ये जो आनंद किरण या किसी ने कर दिया ना मुझे, बस आई नो माई सेल्फ, मैंने जो रिग्रेट किया मिस टिसा की घर वापस, it backfired, she wouldn't come back, something had happened to me there also before that, before Mrs. Munira Gulzar, when I got the fruit of patience in my hands in St. Joseph's College. I stopped going to Miss Tissa. Not even a card, Valentine's card or Christmas card or birthday card for her. But I had to see 1 year. So that regret, I regretted it so much. So I knew that now if you want to get it, it's not that I want to get attached to Mrs. Manira Gulsar. It just happens in one sight. Sometimes I don't know. So Professor Moiser told me that it's reincarnation. Although he won't say it in front of people, this, right? That he believes that Pakistan में उनको मार डालेंगे if he tells people that he believes in reincarnation, is hypnotized. तो वो प्रोफेसर अब डॉक्टर हो गए, लेकिन खैर मुझे थोड़ा समझ में आया कि it's you don't really feel like you shouldn't have gotten attached to these people. अब वो मेरे हाथ में नहीं था, but the point here is that, what is the point here? Never, simple now, she doesn't come to my house, doesn't give me a call, how are you, beta, this, that, right? Nothing like this. You don't call and, don't get attached. Just love. Keep your heart's door open. And let her leave when she wants to leave. Give the other person the freedom. This is love. Love is not possession, possessiveness. I love her and I want her. Not that romantic love. This is not love. This is an emotional thing. You want to gratify yourself. It's giving. But that love, that pure love, true love, that is something else. I've read in Shy Guy's Guide to Life, some Michael Bentin, the author. ये नहीं है कि ये मेरी बन जाए, मैं इसको बहुत चाहता हूँ. If I can't have you. लेकिन वो अब मिस टिसा के साथ हमारी दोस्ती बन गई थी. शी बिकेम अ फैमिली फ्रेंड एंड तो फिर वो दुख होता है ना कि हमारा तो निवाला नहीं, टेस्ट नहीं आता फूड में. बस वो टेस्ट चली गया, वो लाइफ की रौनक चली गई कि मेरी फैमिली फ्रेंड थी मिस टिसा. माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ. मेरी बर्थडेज में आती थी, मेरी आंटी की वेडिंग में आई है. तो ये नहीं है कि पोजेसिव या स्टबर्न या रिजेक्शन की वजह से आई वॉज क्राइंग डिप्रेस्ड ओवर हर. लाइक व्हाट हैव आई डन रॉन्ग. फिर मैं भी गिल्टी फील करती थी, फिर उधर जाती थी, फिर मोर गिल्ट, accumulated guilt. But in college, one time I wished that I was a bird or animal or something. I was like, okay, what kind of a bird, what kind of animal would I be that I would not burden people? सोचने लगी ऐसे कि that I would not feel guilty. Donkey, bird, free. So I was feeling very guilty. So when I started this with Mrs. Munira Gulzar, I asked Bibi Mariam. I had made Bibi Mariam my guide. And the next day she gave me a sign. When I was coming back from college, there were tears in my eyes when I remembered that Bibi Mariam is with me. So it wasn't for possessiveness or all that. कि ये मेरी हो जाए और मैं
boom boom boom, dum dum dum, and chun chun chun, chun chun chun. And I realized I used to thank God so much. I used to tell him on the roof, "Hey, God, I cannot thank you enough. Even if I thank you on every breath that I take, it wouldn't be enough, God. What a beautiful, you have given me this gift." I understand because she didn't know. I wasn't telling so many of my, if I had a relapse, I wouldn't go to the principal and say, "Oh, miss, today I miss my, Miss Tissa so much." No, no, the missing wasn't coming. Sometimes I had a relapse, like, and then, but still I would try to talk myself. Okay, they call, it's okay, she doesn't come, but when did you want her to come? I give her an open invitation. I wasn't that Zara anymore. "Please, please, please, Mr. Sala, please come to my aunt's party. Without you, the party will be like terrible. I will miss you like hell, Mr. Sala, down on my knees, begging you. I beg you, I beg you." मैंने एक भी दफा मिसेस मुनीरा गुलजार को बेग नहीं किया. So how I told her that no, I think when it was raining and she was going alone in her car that time, her sisters were not there, her niece was not there. Her sister was not there from St. Joseph's School. So I didn't beg her. I gave her a reason. I used a reason. I said, "Please, no, 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 mommy, principal." I wasn't calling her mommy at that time. Uh, I said something like, "What, what do I have to lose, or what do you have to lose if my car follows you and that I see that you are safely back home?" She was like, "No, no, no." Before that, right? I must have used some reason. Without begging her, I convinced her. Things like that. So I didn't beg her. I put it on God that my aunt, grand aunt used to say, "इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है और अल्लाह की कायनात में कोई कमी नहीं है." So what if you lose one man? You find अल्लाह की कायनात में कोई कमी है? And when I found the same wordings but in different form from Shakti going, there's abundance. God is divinity. She's not religious, but spiritual, yes. So she talks about the energy first. She starts her book on everything is energy, Shakti going, and then she goes on affirmations and all this. Anyways, the point is that there's abundance. You are abundant. So I was thanking God for her. कि आज आज अगर ये है, tomorrow she may turn out to be the devil. She may be the devil. She may be the devil. वो कौन सा song है? She. So I relied on God who had given me this gift. I didn't even know what she was to me in the beginning because I didn't want to burden her so much. But in the end, I got it from her that you are a burden. And I was like shocked. जितना मिस टिसा इंटरेक्ट मेरे साथ करती थी, आती थी, जितना बर्दाश्त मिस टिसा ने किया है आफ्टर द सेपरेशन, किसी औरत ने इतना बर्दाश्त नहीं किया होगा. वो तो बोलेगी कि call the, I told Miss Disa in 1989, call the police on me, please. Now what is left? अगर मैं जैसे मिस डिसा का, please, please, Miss Disa, I beg you, beg you, beg you.
Mrs. Munira Gulzar would not have been able to take that. I realized that. So I realized after 4 years कि ये तो इनका ड्रामा था उधर कराची सॉरी सेंट जोसेफ्स कॉलेज में ड्रामा था मिसेस मुनीरा गुलजार हैव यू हर्ड दैट मैंने तो कहा था कि देखो लोग चेंज भी हुए हैं she could be the devil song. Yeah, and she turned out very selfish. Elvis Costello's She song. So this who cares what life is? सब अपने अपने मतलब के चलते आजकल मोहब्बत भी है क्या एक तिजारत के हम भी नादान थे और अब बीते यादों का कफन दाग मूवी सॉन्ग वरना जीने के लिए गोगो की तरह सब कुछ बुला लेते हैं लोग दाग मूवी सॉन्ग जब भी जी चाहे जब भी जी चाहे नई दुनिया बना लेते हैं लोग so I'm sorry, I'm not like Gogo and I will never be like Gogo. I cannot. अपनी जगह से कैसे पर्वत I have written a poem for Miss Tissa. If I was a smile, I would be on your face. Decorate your face with a smile. If I was this, I would fence your life. If I were a fence, protect you. If I was this, I would, as before even coming across Celine Dion's If I Could song. So I was, the ये दाग मूवी का If I was, फिर मैंने लिखा है in the end कि without you, I would sit on thorns and your but your memory is not going to go like what was it now the English word है ऐसे ऐसे मैंने poems लिखे हैं कि अभी आप कहेंगे कि I have vascular dementia आप यकीन नहीं करेंगे वो poem तो मैंने फेसबुक पे नहीं नोट्स में रखी है but it was in my black diary I think I've फिर से वो करना पड़ता है how to oh god I have to sign in why doesn't this thing remember okay let me just go to another open another new tab where's Facebook oh let me just go on this device Facebook is here I will sit on thorns and mourn your loss who can do this I will sit बेचारे अबू धाबी आजकल पे करे I will sit on thorns and mourn ये wannabes आएंगे कि उठो उठो I will sit on thorns and mourn your loss लेकिन आखिर आखिर लॉस किस पे आया अबू धाबी तो साइमा फिर एक्स फ्रेंड मेरी कहेगी कि you know सर ले लो now Abu Dhabi is in a loss who will pay your rent I will sit on thorns and mourn your loss end में is it so my boss big poem if I was happiness but if I can't be anything to you I will sit on thorns and mourn thy loss poem written for Mr. Sa I mean, it's a very big, long poem, but just a few words on this.
Let me just write. If I was happiness, what would I do? So I've forgotten. If I was happiness. तेरे बदले मैं रो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती. Oh, where's my mistakes? I'm having a regression. Ah, if hap- if I was happiness. But if I can't be anything to you, but if I can't, I can live. If living is without you, I can't give. I can't give anymore. Ah. But if I can't be anything, अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम. अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम. रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार. Who can love like that? If I was happiness, but if I can't be, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, दूर निगाहों से कोई बुलाता है मुझे. So I'm sorry, I'm not like Gogo. I will sit on thrones in Mandala's. पता नहीं अल्लाह को रहम आ गया. Otherwise, I will sit. I made it a vow to myself. I will sit on किसी की माँ की क्या बोलते हैं मजाल नहीं है किसी कि मुझे इस थॉर्न से उठाए. तुम लोग क्या हो? तुम लोग कुछ भी नहीं हो. इस मोहब्बत ये सच्ची मोहब्बत है. तुम लोग दुनिया वाले selfish people. I sound kind of egoistic. I will sit. तुम कोई माँ का लाल मुझे नहीं उठा सकता है इस थॉर्न से. ये तो अल्लाह का मुअज्जिज़ा था जो मुझे उठाए, वरना तो मैं वो गाना जब मेरी माँ सुनती थी, अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए. तुम लोग तो थोड़ा तुम लोगों को होता है तो अरे मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं खुद अपने आप को बनाऊंगा. अरे इस मोहब्बत में अपने आप को मिटाना है, बनाना नहीं है. ये ईगो वाली मोहब्बत नहीं है, दोस्ती नहीं है. इसमें ईगोलेस होता है. इसमें आता है देवदास. इसमें सेल्फ, लोग कहते हैं तुम लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में डाल दिया. इधर गोगो फोगो वाले लोग नहीं, इधर तो ऐसे लोग होंगे जो परमांसा विश्वानंदा की तरह, अगर लाइक लेट्स से उन्होंने गाया है अरे रे मेरी जान है राधा तुम्हीं पे कुर्बान. हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम राधे राधे करेंगे.
हमें और क्या काम है? हमारा काम ही ये है, सब कुछ ये हमारा दारो मदार इस पे ये होती है मोहब्बत। परमहंस विश्वानंद ने कहा कितने लोगों ने मुझे धोखा दिया है मोहब्बत में, आई हैव लव्ड देम बट दे हैवंट लव्ड मी, बल्कि बिट्रेड हिम। ऐसे वैसे मुझे गोगो की तरह लोग नहीं चाहिए। आई विल सिट ऑन thorns and mourn thy loss, मिस्टर साहब। ये तो एक मुअज्जिज़ा हुआ था 1989 में। मैंने तो अपने आप को थॉर्न्स पे बिठा दिया था। राधे राधे कहो, राधे राधे है बिना जिसके मौत। ये भक्ति मार्ग का परमहंस विश्वानंदा, नो कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड। और क्या गाता है परमहंस रिटन। तुम लोग जाओ, जिसको अपना काम करना है रिटन, अपना प्रोफेशन बनाना है, अपने आप को देखना है। मुझे अपनी असलियत पे आने दो, जो मेरी मोहब्बत थी। अपना नाम बनाना है। रिटन फॉर मिस्टर साहब। ये लो, इसी लोगों ने कहा कि अपनी माँ को तुम अपना पूरा घर ब्रदर को, मिस टिसा ने कहा ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर उधर, उसके पास जाओ, अगर वो दुबई में है या क्या है। Why don't you go to your brother in America, Mr. Sir, instead of sitting, I mean, sorry, instead of being in that jungle of Karachi alone? क्या मिला उधर कराची में? So, गोगो पोगो को छोड़ो, ऐसे लोगों को, and we will sit। कोई माँ का लाल मुझे, माँ का लाल मुझे इस थॉर्न से उठा नहीं सकता है। उठाया तो अल्लाह ने उठाया मुझे। बस एक रिग्रेट है कि मैं मिस टिसा ने कहा था दारुल सुकून, ने कहा उधर माए ऐसे डिफेक्टिव चिल्ड्रन है, हमारे बेटी हैं। सिस्टर गर्ट्रूड के पास जाओ, देखो। ऐसे तो मैं गई थी इनसे। I don't know when I had gone before she even, I knew there was Darul Sakoon and I had gone inside Darul Sakoon. I said yes, yes, yeah, but I couldn't do that. That's my regret. Social worker। तो और क्या गाया है परमहंसा विश्वानंद? राधे राधे कहो परम, एक तो ये हिंदू नाम मुझसे नहीं, सॉरी, याद होते हैं। परमहंसा विश्वानंदा, कीर्तन राधे राधे कहो। ये being good isn't enough for God, अच्छा, ये one day ago, परमहंसा, being good isn't enough for God। ये मुझे देखना है, it's one day ago। Let's share लॉ। अगर ये लोग आ गए ना मुझे कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट देने,
अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम. वैसे कीर्तन. श्री राधे श्री राधे राधे. मुझे कोई काम नहीं है. परमाहंस विश्वानंदा कहता है. Which kirtan is that now I have to sit and remember? किसमें है वो कि मेरा तो बस यही काम है कि राधा राधा करना और क्या करना. ये क्यों आपका ये काम. और मैं उनके साथ मैं कह रही हूँ why do you want to do this राधे राधे. I did this and राधे राधे कहो राधे है बिना जिन जिसके मोहन भी आधे. हम इधर बैठेंगे और राधे को अपना सब कुछ दे देंगे. राधा को आप द जर्नी फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट dancing in the dark. No, dancing during the Shri Kirt. Oh God, here comes. Okay, I have to take a break. No copyrights infringement intended. Oh, I have to just show you this Paramahamsa Vishwananda. कभी कहते हैं ना कि कभी दोस्त अपनी वो भूल जाता है. The friend sings the song we have forgotten. The friend sings us the song we have forgotten. ये बहुत अजीम लोग होते हैं जो मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी दे सकते हैं. कोट. सब ऐसे चोजन नहीं होते मोहब्बत के लिए. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. Who's it by? C.S. Lewis. शानिया ट्वेन ने भी ये अपलोड किया है गुडरीड्स में. C.S. Lewis. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम. मेरा और क्या काम है. हम बैठेंगे. ये परमहंस विश्वानंदा को और कुछ काम नहीं है कि ये सॉरी am I being presumptuous? तो राधे परमहंस विश्वानंद कीर्तन और कीर्तन किस सॉन्ग में है. सीटी पर जय राधे. कीर्तन यमुना किनारे ए आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए. सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा क्या दे सागर नहाई. Oh, sorry, I don't know the exact words. Distorting is seek deeper. I'm just from the other Kirdari Ashta.
श्री राधे। कौन सा कीर्तन था? परमहंस विश्वानंद कि मेरा और कुछ काम नहीं है. I don't have any work. So you see, these people have come to remind me what is true love. Oh, ये मुझे कुछ मिस्टेक हो गई. So I hope I don't get copyrights. हाँ, डर भी लगता है. तो what shall I say? कीर्तन नहीं मिल रहा है. राधे का कीर्तन कहाँ है जिसमें उन्होंने परमा इन्होंने नहीं, उसने उसने देखो, अल्लाह आ गया था, खुदा आ गया था, एम्ब्रेस किया मुझे लंदन में. डैडी का कहेगा, अल्लाह ये लंदन में क्या आ गया था. लंदन अल्लाह को बहुत पसंद है. राधा रानी को जो पसंद है. तो ये लंदन अल्लाह को पसंद है. अल्लाह अल्लाह आए थे, एम्ब्रेस मी ओ गॉड, एम्ब्रेस मी. तो ओ गॉड बोले ना, व्हाट्स दैट अदर के वो फलक से उठा के, अब खाक से उठा के, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारान याद करेगी दुनिया. मुझे थोन से उठा के फलक पे बिठा दिया. मेरी दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी ना आए. लोग फेंकते हैं नीचे. तो what can I give? Tell them, Rumi. Love. Love makes the world go round. Celine Dion ने गाया, किसने गाया? तो sorry, I cannot be like you people. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फिर बाद में ये याद दिलाएंगे मुझे. अरे रे मेरी जान राधा, तुम्ही पे कुर्बान. So I cannot let them sing this. 1,000 lives I give you of love, divine love. May you be so high. So वो गाना कौन सा है? मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छुपाऊं. मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना. अब तो मुझे लगता है ये मोहब्बत की दुनिया का सूरज है. इस द सन, परमहंस विश्वानंद. अब ऐसे आएंगे. सॉरी गोगो, आई डोंट मीन टू put you down, but I have to say this. You don't know what love is. You see, you don't know. लोगों ने अपनी जान दे दिया है. ससी पन्नू, रोमियो जूलियट. और कौन है? ससी पन्नू, रोमियो जूलियट. ये आपका काम नहीं है. ये बड़े बहुत अजीम लोगों का काम.
जहाँ मोहब्बत है वहाँ अल्लाह है. Okay, so I have to take some break and then I will come back later. I don't know what I leave you with, but I leave you with true love. Above all, love. Whitney Houston. I leave you with love and love alone. Don't tell me that this love that I should do, give and all this. Oh, I leave you with something here. Sufi saying, uh, they tell, take the, they tell me, bring the doctor. Uh, so, अच्छे अच्छे मुझे ठीक नहीं कर सके हैं साइकोलॉजिस्ट PhDs ऑफ स्टैनफोर्ड एंड पैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, बिकॉज ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम. समझे? गो ज्यादा तुम लोग टेंटे पेंटे नहीं करो, अपना अपने पास रखो, बिकॉज ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम. महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम. बेचारी, हाँ ये तो है कि कैपिटल में वो अबू धाबी हमें दे रही है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं. ओके, थैंक यू. गोइंग नाउ, गोइंग गोइंग गॉन.